In the corridors of history, there are individuals who carve a path of significance. Today, we shed light on Sheikh Zahuruddin, a pioneering figure in the annals of engineering education. Back in the early 20th century, when McLagan Engineering College in Lahore, now known as the University of Engineering and Technology, UET, was taking its fledgling steps, Sheikh Zahuruddin emerged as a trailblazer. Among the first batch of students, Sheikh Zahuruddin stood out, not just for his academic prowess, but also for being the sole Muslim engineer in a class predominantly composed of Hindus and Sikhs. The times were challenging, and the pursuit of education was a beacon of unity, transcending religious and cultural boundaries. Sheikh Zahuruddin graduated as an electrical and mechanical engineer when the degrees were intertwined. Then electrical and mechanical degree was combined. His journey did not end at graduation. Instead, it marked the beginning of a remarkable career in the field. Sheikh Zahuruddin went on to serve in the Ministry of Industries, taking on responsibilities that showcased his dedication and competence in the engineering realm. Sheikh Zahuruddin's legacy extends beyond his professional life. His commitment to education passed down to the next generation, as two of his sons, Anwar Salim and Anwar Basir, followed in his footsteps. Anwar Salim, with a degree in mechanical engineering, became an educator in UET's mechanical engineering department, imparting knowledge to the aspiring engineers. Anwar Basir, specializing in electrical engineering, contributed to the engineering landscape by working with NESPAC, showcasing the family's commitment to the field. Anwar Basir resides in Canada, a testament to the global impact of Sheikh Zahuruddin's legacy. His journey, marked by perseverance and excellence, serves as an inspiration for the generations to come. As we reflect on the remarkable journey of Sheikh Zahuruddin and his family, we honor not just a man, but a legacy that continues to shape the world of engineering. The roots planted in the halls of McLagan Engineering College have blossomed into a tree of knowledge, and Sheikh Zahuruddin's name is etched in its sturdy trunk. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for giving me the opportunity to speak on behalf of the department. So I'm just going to give you a brief introduction about the department, what is going on, and what we have in the form of plans for the future. We currently have our faculty around 30 plus, where 20 of those are PhDs. The current enrollment of our department is 200 per year for the undergraduate, and the number of graduate students that we induct, that fluctuates every year. It varies from somewhere from 40 to 70. So that's the bracket in which every year we actually have our graduate students coming. Apart from this, we have been going through this faculty development program that was primarily funded by the government of Pakistan through HEC. That have given pretty good results in the last few years, but currently we are facing the problem of faculty retention. So one of my suggestions with this particular opportunity is to our government and policymakers that we should look for some faculty retention programs as well, which are going to actually strengthen many of our public institutes where we are actually facing this particular problem in more aggravated fashion. As far as the research culture is concerned, we have promoted the research culture by reducing the workload of our faculty members who are currently engaged in many research projects. So this is how we manage and facilitate our faculty members for our research activities. If we talk about the number of scholarships that our students are getting going abroad,
So that somewhere falls between 20 to 30% of our graduates. They actually land up out of Pakistan for higher studies or for job purposes within 2 years of their graduation. In addition, we are collaborating currently pretty strongly with our local industry, and we have been able to secure our graduate fellowships from 3 of our industrial partners. So they are sponsoring our graduate students, which are going to be potentially hired by them at the end of their degree program. And we want to strengthen this particular initiative so we can actually strengthen our graduate program and can actually take it to the next level, which always has been a weak link between our university and the industrial counterpart. As far as the research projects are concerned, our faculty is able to not only acquire research projects and research funding from our national donors but also internationally. So we do have public funding from not only HEC but international funding from World Bank, from Korean government as well as from Canadian government. So these are certain opportunities that our faculty has actually explored. Finally, I would also like to comment on, because this technological advancement that we are witnessing nowadays, that actually require every institute to pick and choose, because not any institute in the world can actually counter or have pretty good strength of faculty on all the aspects of electrical engineering. That has become a challenge for almost every institution. So we have selected certain areas, thrust areas for ourselves, and we are collaborating with our partner institutions locally. For example, we have an MOU with LUMS where our students can enroll in LUMS courses which are not offered at UET and vice versa. That is something we are trying to explore on international arena as well, where we would like to see that if we can have certain arrangements with some international institutions as well, because in post-COVID era, this has become a viable solution. People are taking degree programs online. So in that context, we want to explore any possibility that our graduate students or even undergraduate students can register with some courses with an international institution while sitting in Pakistan. So this is something we want to explore and see how it can be materialized. Thank you very much for giving me the opportunity and to speak on behalf of the department. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं इलेक्ट्रिकल बैच 2020 का स्टूडेंट हूँ। इस टाइम मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉप 3 स्टूडेंट्स में से एक हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सोसाइटी है हमारी स्टूडेंट सोसाइटी IEEE, उसका मैं चेयरपर्सन हूँ। IEEE UET की सोसाइटीज़ में से सबसे पुरानी सोसाइटी है। एक दो और भी इसके साथ हैं, लेकिन ये सबसे पुरानी सोसाइटीज़ में इसका शुमार किया जाता है। इसके अलावा मैं इस टाइम जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं उनमें मेरा शुमार है जो कि विद ऑनर्स ग्रेजुएट करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा शुरू से ही पैशन था। मुझे इसमें बचपन से ही इंटरेस्ट था, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ख़ास तौर पर, जो कि इस टाइम मेरा मेजर है। मज़े की बात यह है कि मैं सिर्फ एक वाहिद बंदा हूँ जो टेलीकॉम के अंदर मेजर कर रहा हूँ अपने बैच में से। तो इसके अलावा हमने टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, इवन दो कि मैं एक अकेला स्टूडेंट इस मेजर के अंदर हूँ। स्टार्ट से बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल में जब हम आए थे तो कोविड था। कोविड के दौर में इलेक्ट्रिकल हमारा स्टार्ट हुआ, तो आते साथ ही हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इतना कोई ख़ास आप कह सकते हैं मज़ा नहीं आया था। लेकिन इन द थर्ड सेमेस्टर हम बैक ऑन कैंपस थे और यूनिवर्सिटी हमारी फुल स्विंग में थी। तो तब यूनिवर्सिटी लाइफ का हमें फुल मज़ा आना स्टार्ट हुआ था और टीचर्स के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन था। तो काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स रहे हैं मेरे थ्रू आउट माई यूनिवर्सिटी। अब आखिरी साल है, अभी भी टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं और जितनी भी हमारी यहाँ पर लैब्स हैं, तकरीबन हर लैब में ही कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। सबसे ज़्यादा इन्जॉय मैंने आप कह सकते हैं माइक्रोवेव वाली लैब थी, उसके अंदर किया था। उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट के साथ आपको डील करना पड़ता है जो कि बहुत सेंसिटिव मेजरमेंट्स परफॉर्म करते हैं।
तो इन इटसेल्फ वो एक काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। बाकी अभी मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके लिए हमें इंशाल्लाह पीईसी से फंडिंग भी मिल जाएगी, और ये काफ़ी एजाज़ की बात होगी कि हमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हमारे प्रोजेक्ट को फंड करती है। प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग एक रडार सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि धुंध के अंदर, आपको पता है कि कुछ भी नहीं नज़र आता आमतौर पर, तो धुंध के अंदर सब जानते हैं कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर मोटरवेज़ के अंदर और इस तरह की चीज़ों में। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम एक रडार सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं जो गाड़ी में लगेगा और उससे इंसानों की जान बच सकती है। इस पर हमारे सुपरवाइज़र अदीम असलम साहब हैं, वो हमें फुल सपोर्ट करते हैं। बाकी डिपार्टमेंट के और भी टीचर्स फुल सपोर्टिव हैं इस एंडेवर में, और मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के जो मेंबर्स हैं वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी डिफरेंट कोर्सेज़ में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए थे। मुझे याद है कि माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स में एक सबसे डिफरेंट प्रोजेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सबसे डिफरेंट तरीके से मैंने किया था वो अपना प्रोजेक्ट। हमने एक स्मार्ट मीटर बनाना था, जो कि एनर्जी मीटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो उसके लिए अपना खुद का एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया था। माइक्रो प्रोसेसर्स हमने स्टडी किए थे और जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उनको यूज़ करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स और वोल्टेजेस और करंट्स की मेजरमेंट्स परफॉर्म करके डिफरेंट कैलकुलेशंस की थी, और उनमें से हमने फिर डेटा स्टोरेज और क्लाउड पर भेजना और इस तरह के काफ़ी सारे काम किए थे। तो वो एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, एंड वी पुल्ड इट ऑफ इन अ वीक। तो वो भी एक अच्छी खासी अचीवमेंट थी, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी लैब्स में नहीं करते। वो जब आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा यार ये भी ऐसे होता है, इसमें ये इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा हमने एआई में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स लिया था पिछले सेमेस्टर में, और उसमें भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था एट दी एंड जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। और हम प्रोजेक्ट बेसिकली ये था कि हम डिफरेंट लोगों की आवाज़ें हमने रिकॉर्ड की थी, और बेस्ड ऑन देयर वॉइस हम ये डिस्टिंक्शन करना चाहते थे कि यार ये कौन बंदा बोल रहा है। वो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल रहा था और हमारा मॉडल बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चला था उस टाइम पर। इसके अलावा मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट भी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सारा टाइम पढ़ नहीं सकते, इवेंचुअली यू विल बर्न आउट, आपको थोड़ा सा एंजॉय करना पड़ता है। तो दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, लोग जहाँ के बहुत सपोर्टिव हैं, और हर बंदा आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही आपको खींचने के लिए लगा हुआ है कि आप आगे ना जा सको। अगर आप आगे जा रहे हो तो लोग आपको पुश करेंगे आप आगे जाओ। ख़ास तौर पर टीचर्स जिधर वो टैलेंट देखते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को पुश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और जितनी उनको ज़रूरत होती है वो उतनी उनकी सपोर्ट करते हैं, और जितना वो मदद कर सकते हैं की जाती है। इन 4 सालों में मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि यार अच्छा मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं मुझे फील हुआ। जब भी मुझे कोई मसला आया, अच्छा पता था यार ये मसला है, मैं फ़लाने टीचर के पास जाता हूँ, वो मेरा ये मसला हल कर देगा। ये वाला मसला आ गया, मैं उस टीचर के पास जाता हूँ, और जब भी मैं किसी भी टीचर के पास गया उन्होंने मेरी फुल सपोर्ट की है और उन्होंने फुल हेल्प की है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला असद है एंड आई एम करेंटली द वाइस चेयरपर्सन ऑफ IEEE UET student branch. तो बेसिकली IEEE stands for Institute of Electrical and Electronics Engineers. एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है एंड इसके हर वर्ल्ड वाइड मोस्टली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में इसके स्टूडेंट चैप्टर्स होते हैं, एंड UET में भी है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी है ऑफिस ओवर हियर। एंड तो IEEE UET बेसिकली क्या करती है, वो हर साल कुछ एक सीरीज ऑफ इवेंट्स अरेंज करती है, फ्रॉम स्मॉल स्केल इवेंट्स टू मेगा इवेंट्स, एंड वी आर स्प्लिटेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ चैप्टर्स। वी हैव टेक्निकल चैप्टर्स एंड नॉन टेक्निकल चैप्टर। नॉन टेक्निकल में वही आपका इवेंट मैनेजमेंट एंड ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट एंड अ बंच ऑफ अदर चैप्टर्स एज वेल। प्रमोशंस हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी। एंड टेक्निकल में वी कवर ऑल फील्ड्स, वी कवर कंप्यूटर साइंस एज वेल,
We cover artificial intelligence and power systems as well as telecommunication. And of course, chairman साहब की field अपनी embedded systems as well. तो हम बहुत सारे events arrange कराते हैं. Recently we had an event with 10x engineers that was on image processing. And then we had an event with NTDC SCADA. इस साल हमारे event रहे. Past events में जो highlight है हमारी, we have a huge event called All Pakistan Electrical Symposium, जिसपे alumni को invite किया जाता है and different companies को invite किया जाता है, and it's a huge event. तो all over Pakistan वहाँ से लोग आते हैं. So these are signatures events of IEEE UET, and we induct from all different departments, from electrical, computer science, computer engineering, and we have a variety of students from all batches, and we have certain alumni who are also connected with us. So if you have any other questions, you can contact me later. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान नईम है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूईटी लाहौर में एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जर्नी का आगाज़ आप कह सकते हैं क्लास 8 से हुआ है। जब मैं क्लास 8 या क्लास 9 में था, तो जहां मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो वहाँ के एक टीचर हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान, आजकल वो डॉक्टर हैं, तो उनको देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। वो अपने घर में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाते थे, लाइक छोटे छोटे रोबोट्स, छोटे छोटे गैजेट्स। तो इन गैजेट्स को देख के, इन प्रोजेक्ट्स को देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। वरना मेरा पहला इरादा यही था कि मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट बनूं, स्पेशली इन नासा। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा इंटरेस्ट जो है वो चेंज हुआ। तो फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स मैंने ये फैसला कर लिया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने करनी है, और वो भी यूईटी लाहौर से। और ये फैसला मैंने अगेन अपने जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, उन टीचर को देख के मैंने ये फैसला किया। सो आई फोकस्ड ऑल माई एनर्जी, आई स्पेंड ऑल ऑफ माई रिसोर्सेज जस्ट टू गेट एडमिशन इन यूईटी लाहौर मेन कैंपस। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दाखिला यहाँ पे हुआ और 4 साल मैंने गुजार दिए। एंड 4 साल के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो कोर्सेज मैंने यहाँ से पढ़े हैं, इट रियली हेल्प मी अ लॉट। इट चेंज माई थिंकिंग, इट चेंज माई द वे आई लुक एट थिंग्स। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मेरे अंदर आ गई थी, टाइम को मैनेज करने की जो स्किल है वो मेरे अंदर डेवलप हो गई थी, और प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने की जो है वो स्किल जो है वो भी मेरे अंदर जो है डेवलप हो गई थी। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ। सो आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूईटी लाहौर, आई जॉइन माइक्रोटेक इंडस्ट्रीज़। ये स्मार्ट मीटरिंग से रिलेटेड कंपनी है और अभी भी काम कर रही है। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किए, लेकिन इंडस्ट्री मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि मुझे 9 to 5 टाइमिंग्स जो है वो सूट नहीं करती। सो देन आई डिसाइडेड टू स्विच माय करियर एंड कम टू एकेडमिक्स। तो फिर मैंने एमएससी में दाखिला लिया, एमएससी मैंने कंप्लीट किया। एमएससी कंप्लीट करने के साथ साथ मुझे एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग अपॉर्चुनिटी मिली, और चूँकि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, और वो है टीचिंग, हाउ टू टीच। क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे वो बड़े लो लेवल किस्म के स्टूडेंट्स थे, तो उनके लेवल तक जाके उनको पढ़ाना, ये मैंने उस यूनिवर्सिटी से सीखा। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द अथॉरिटीज़ ऑफ दैट यूनिवर्सिटी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टीच एट दैट यूनिवर्सिटी। फिर मुझे यहाँ पे लेक्चररशिप का चांस मिला, मैंने वो चांस अवेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हुआ। एंड फॉर द पास्ट 5 years मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो मेरा है प्रोग्रामिंग वाली साइड पे है। मुझे कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना, कंप्यूटर्स के बारे में सीखना, कंप्यूटर को डिज़ाइन करना, कंप्यूटर को चलाना, ये बहुत ये फैसिनेट करता है। सो दिस इज़ माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, डिज़ाइनिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर की फील्ड, एंड साथ साथ प्रोग्रामिंग। सो ये प्रोग्रामिंग वाली जो चीज़ है, ये प्रोग्रामिंग के जो सब्जेक्ट्स है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स।
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल हो गए इन 2 कोर्सेज़ को पढ़ाते हुए। एंड एट द सेम टाइम कभी कभी मुझे इलेक्ट्रिक सर्किट्स से रिलेटेड कोर्सेज़ जो हैं वो भी मिल जाते हैं, और वो भी मैं बखुशी जो है वो पढ़ा देता हूँ। And as far as the students are concerned in UET Lahore, they are excellent students, brilliant students. उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है। बल्कि इनफैक्ट जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है हर सुबह यहाँ पे आने की, वो है ये हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। इन्हीं की वजह से मैं सुबह उठ के बड़ी मोटिवेशन के साथ यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और फिर रात को 12 बजे तक 1 बजे तक जो लेक्चर की तैयारी करता हूँ, ये इन स्टूडेंट्स की वजह से। ये स्टूडेंट्स ना हो तो शायद ये पढ़ाने की मोटिवेशन या रिसर्च करने की मोटिवेशन मेरे अंदर जो है वो ना हो। सो ये स्टूडेंट्स हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, एंड आई विश कि ये लोग जो हैं वो फ्यूचर में जाके कामयाब हों और हमारी टीचिंग का कोई फ़ायदा ये उठाएं, फ्यूचर में अपने आप को बनाएं और दुनिया को फ़ायदा पहुंचाए, अपनी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाए, एंड सो। Welcome to the High Voltage Laboratory of UET Lahore at the Department of Electrical Engineering. My name is Farhan Mahmood, and I would like to give you an overview of the various activities which are conducted in this high voltage laboratory. The subject of high voltage engineering deals with the behavior of insulating materials when subjected to high voltages. The insulation of the high voltage equipment is mostly subjected to the rated voltages. However, at the same time, the insulation of the high voltage equipment is also subjected to the transient over voltages which are produced under the abnormal conditions, such as the lightning strikes, switching operations, fault initiation, and fault extinction. Now, these over voltages severely stress the insulation of the high voltage equipment. The high voltage laboratory of UET Lahore was established in 1950s to provide commercial testing facilities to the local industry of the country. Now, in addition to the high voltage testing, the high voltage laboratory is also used for teaching and research purposes by the undergraduate and postgraduate students of electrical engineering. In the laboratory, we have 3 main generators. A DC voltage generator, which can produce an output voltage of 50 kV. We also have an AC voltage generator that can produce an output voltage of 150 kV at power frequency. And finally, we also have an impulse voltage generator that is capable of producing an output voltage of 400 kV, similar to those which are produced during the lightning strikes. These tests include the power frequency voltage withstand test, the lightning impulse voltage withstand test, the DC voltage withstand test, and the partial discharge testing of the high voltage equipment. I hope that you have enjoyed this video. For more information, you can visit the high voltage laboratory of UET Lahore. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद असगर साकिब नाम है मेरा। मैं प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूईटी लाहौर में। ये जो लैब है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये लैब है पावर सिस्टम की जो लैब है, और इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो जो जनरेटर साइड पे जनरेट होती है और उसको फिर स्टेप अप वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए जो है हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट किया जाता है उस पावर को, और उस पावर को ट्रांसमिशन लाइंस जो है सब स्टेशंस में लेके आती हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो हमारे हैं डिफरेंट इन ट्रांसमिशन लाइंस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की थ्योरीज जो हैं वो पढ़ते हैं, और उस थ्योरी को जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका जो थ्योरी का है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। सो ब्रॉडली क्लासीफाइंग ट्रांसमिशन लाइंस आर ऑफ 3 kinds: short transmission line, medium length transmission lines,
एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली हम ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज और उनकी जो लेंथ है उसकी बेस पे करते हैं। और इसके अंदर जो है वो पैरामीटर जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस के जो पैरामीटर्स हैं वो इन ट्रांसमिशन लाइन की क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। दो किस्म के पैरामीटर्स होते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के, एक सीरीज पैरामीटर जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आती है, और दूसरा पैरामीटर होता है शंट जिसमें कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होती है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो स्टूडेंट वो कुछ और पैरामीटर है, दैट इज द सिंपलेस्ट मॉडल जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन को जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट किस्म के जो तीनों किस्म की लाइंस के पैरामीटर जो है वो स्टडी करते हैं यहाँ पे, जिसमें और फिर वोल्टेज देखते हैं कि सेंडिंग एंड पे कितना वोल्टेज है, रिसीविंग एंड पे कितना वोल्टेज है, करंट कैसे है सेंडिंग एंड पे, रिसीविंग एंड पे करंट कैसे है, सेंडिंग एंड पे पावर एक्टिव पावर कितनी है, रिसीविंग एंड पे एक्टिव पावर कितनी है, सेंडिंग एंड पे रिएक्टिव पावर कितनी है, रिसीविंग एंड पे रिएक्टिव पावर कितनी है, पावर लॉस कितनी है जो है ना वो हो रही है। तो ये परफॉर्मेंस के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ये स्टूडेंट सारे चेक करते हैं, जो थ्योरी उन्होंने पढ़ी होती है वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर, सो दैट एंड दे गेन एक्चुअली यू नो lot of insight actually and can verify and augment their concepts which they have learned in theory classes. So that is one aspect of this transmission lab. डिस्ट्रीब्यूशन लैब्स के अंदर जो है हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट किस्म की जो बस बार्स होती हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो उससे स्टूडेंट को फेमिलियराइज करवाते हैं, उनके ऑपरेशन के ऊपर किस तरह एक बस से दूसरी बस में किस तरह वो जो है वो सर्किट कॉन्फ़िगर होता है। उसके अलावा जो है ओवरहेड लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस वाला कॉन्सेप्ट है, ये स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के क्या पैरामीटर्स है वो कैसे वेरी करते हैं, उसके दरमियान उसके अंदर अगर फॉल्ट आ जाए तो वो उसका डायग्नोस उसको कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कहाँ पे फॉल्ट आया, किस किस्म का फॉल्ट आया। और उसके अलावा जो है वो उसके अंदर जो है वो पावर किस तरह पावर लॉस कितना होगा और वोल्टेज किस तरह वेरी होगा सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के दरमियान। तो ये चीज़ें जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में वो परफॉर्म करते हैं। जो तीसरी लैब है दैट इज़ अबाउट पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम में ऊपर या इलेक्ट्रिकल किसी भी सिस्टम के ऊपर डिफरेंट किस्म के फॉल्ट्स आ सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो ओवर वोल्टेज हो सकता है, अंडर वोल्टेज हो सकता है, ओवर फ्रीक्वेंसी हो सकती है, अंडर फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फिर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट के अलावा ओवरलोड हो सकता है। और तो ये चीज़ें जो है ये हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, ये फॉल्ट क्रिएट करते हैं, फिर फॉल्ट को कैसे जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको रिमूव कैसे करना है, ये स्टूडेंट सारे परफॉर्म यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फॉल्ट ये इसके अंदर जो पावर सिस्टम के अंदर पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर जो बेसिकली प्रोटेक्शन सिस्टम है मेनली कंपोज्ड ऑफ कि फॉल्ट आइडेंटिफाई कैसे करना है, दैट इज डन यूजिंग करंट ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, और फिर सर्किट ब्रेकर उसको जो है वो जब उसे अबनॉर्मल सिग्नल मिलता है दोनों डिवाइसेस से या एक किसी डिवाइस से, तो फिर वो सर्किट ब्रेकर पावर सप्लाई को जो है वो फॉल्टी सेगमेंट से अलग कर देता है। तो ये सारे जो है ना इसके अंदर सीटीज और पीटीज के करैक्टरिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट इसके अंदर वेरीफाई करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पावर सिस्टम लैब। थैंक यू वेरी मच। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Wireless Communication Laboratory of Electrical Engineering Department, UET Lahore. This lab was established way back in 1998. The primary objective of this lab was to conduct commercial testing for wireless communication devices, as well as to conduct undergraduate and postgraduate research. So in context of this objective, various new courses were offered so that they could help in undergrad and graduate studies, as well as commercial testing. First of all,
started from electromagnetic compatibility tests of energy meters, then digital energy meters and medical instruments. Finally, various communication wires, their parameters, for example, their frequency spectrums, their losses, velocities, their dielectric parameters, they were calculated, as well as various microwave and high frequency components. They can be checked, their parameters can be checked in this lab. In this lab, we have the facility of generating up to 20 gigahertz frequency, as well as we can check various network components up till this 20 gigahertz. We have network analyzers that can work from 50 megahertz to 20 gigahertz. Signal generators, they could also go up to 20 gigahertz. Then this lab also had a lot of DSP processors. Now we have, by the help of the UET alumni, now we have SDRs, and various projects are going on, those SDRs. Currently, we have 2 undergrad projects on SDRs, as well as we are working on, you can say, a multinational array processing project with Sparko. So this lab has contributed to the research, teaching, as well as commercial testing in various ways. Thank you. वेलकम टू द मेकर्स लैब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूईटी लाहौर। ये लैब हमारी 2016 में इस्टेब्लिश हुई। इस लैब में बच्चों को हम प्रोटोटाइपिंग बोर्ड और पीसीबी बनाना सिखाते हैं। ये पीसीबी बोर्ड हमारी हर तरह की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को यहाँ वैरो बोर्ड बनाना सिखाते हैं। वैरो बोर्ड में बच्चे सोल्डरिंग और इक्विपमेंट के कनेक्शन करना सीखते हैं। उसके बाद बच्चों को हम पीसीबी बनाने पर मूव कर देते हैं। तो पीसीबी में सबसे पहले बच्चे बाज़ार से पीसीबी बोर्ड लेके आते हैं। उसके बाद हम एल्टीएम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए पीसीबी का डिज़ाइन बनाते हैं, और उसके बाद जब वो डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है तो वो बच्चे उस डिज़ाइन को पीसीबी बोर्ड पे ट्रांसफ़र करते हैं यूजिंग टोनर ट्रांसफ़र मेथड। उसके बाद बच्चे यहाँ हमारे पास ड्रिल मशीन मौजूद है, तो ड्रिल मशीन पे बच्चे उस पीसीबी में ड्रिल से होल करते हैं और कंपोनेंट पैच करते हैं। कंपोनेंट पैच करने के बाद उस पर सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डरिंग करने के बाद अगर हमारे सर्किट में कोई मसले वगैरह हों तो उनको डिबग करके बच्चे टेस्टिंग करते हैं और पीसीबी को सबमिट करवा देते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamad Hassan. I am the Manager Research and Development at NWN Next Generation Wireless Sensor Networks Lab at Al-Khwarizmi Institute of Computer Science. This lab was established in 2002, and primarily this was led and is being led by Professor Dr. Muhammad Tahir. We are 5 to 6 persons who are serving in this lab, comprises of research assistant, associates, and some PhD students as well. The main objective and the mission of the establishment of this lab was to build embedded based solutions, wireless and sensing based, and going up in future. We established to work in autonomous systems and as well as the AI based applications for humanity, for driving technologies, and for monitoring solutions such as gunshot detection, sound detection, video monitoring, as well as the forest monitoring, and so many other things. So we have done some work in past regarding research as well as development and the commercialization. We commercialized few projects. One of the project was Punjab, that was the acoustic surveillance solution for the Punjab Safe Cities Authority in Lahore. This solution has been deployed at Lahore city for 300 sites at their premises, as well as and the recent commercialization, we have built a solution for Pakistan Railways on safe driving, digital rail safe driving tool that is to help the driver to meet the challenges and to help him in the critical conditions so that they can drive well and they can observe the things by the system, and the event-based alerts are there in the cabin of the driver. And so actually the purpose is to reduce the number of incidents and to build a smooth drive. So looking at our future perspective, we are
looking forward to take on the basic institutes and to help the departments such as need of Pakistan Army, such as SNGPL and other basic institutes, so that they can use the technology and they can get rid of old-fashioned technologies, and the technology may help and elevate their levels and the performance and as well as their services. So that's all the introduction from our side. Thank you.
Assalamu alaikum. My name is Ariba Kashaf and I am electrical student final year with computer major. So currently हमारी यूनिवर्सिटी का ये environment है कि females को mostly ऐसा होता है कि हम जब कहीं भी जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो females का parents का ये concern होता है कि females को किसी भी यूनिवर्सिटी में कैसे भेजें. So हमारी यूनिवर्सिटी का जो environment है उस तरह से females के लिए बहुत comfortable है हर चीज़. Like अगर आप classes में जा रहे हैं तो classes में भी specific seats हैं females के लिए. उसके अलावा अगर आपने टीचर से इंटरेक्ट करना है, मोस्टली यहाँ पे ये सीन है कि टीचर्स जो हैं वो मेल्स होते हैं, बट ये सीन है कि मतलब फीमेल्स के साथ एक इजी कनेक्शन है, एक लाइक इस्टेब्लिश किया है उन्होंने कनेक्शन जो कि बहुत कंफर्टेबल है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए. एंड इसी तरह से अगर हम बात करें सोसाइटीज़ की, तो सोसाइटीज़ में भी ना लाइक पहले ऐसा होता था कि आज से 5 साल पहले अगर हम बात करें तो ऐसा होता था कि इलेक्ट्रिकल में फीमेल्स बहुत कम थी, बट अब जो आकर फीमेल्स की रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है. इट्स अराउंड 30-40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स. सो सोसाइटी के जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें फीमेल्स जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट करती हैं एंड मोस्टली डिज़ाइन, डेकोर और इस तरह के काम ज़्यादा फीमेल्स करती हैं. सो अभी मैं भी पर्सनली मैंने भी एक इवेंट लीड किया था लास्ट ईयर जो कि था सॉफ्ट स्किल्स पे, एंड वो काफ़ी मतलब ह्यूज इवेंट था. सो मैं उसकी लीड थी एंड वो बहुत अच्छे से अरेंज हो गया था. सो इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल्स की इन लाइक ओवरऑल मतलब इलेक्ट्रिकल अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इट्स ओके, बट इलेक्ट्रिकल में एक स्पेसिफिक फीमेल्स को ना एक एज होता है कि यहाँ पे फीमेल्स की परसेंटेज ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से एक मतलब माइनॉरिटी की तरह कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब बिल्कुल इक्वली पार्ट दिया जाता है. Hello, Assalamu alaikum. My name is Tashfa and I'm a student in 3rd year at Electrical Engineering Department of UET Lahore, and my experience so far has been incredible. UET Lahore itself is great, but the electrical department, it really establishes the supremacy of the university, I think, because when I came over here, all I knew was I want to learn something related to engineering. I want to get some hands-on experience so I can get some real applications of math and stuff. But when I came over here, it was very dynamic. I got introduction of so many different new topics. I learned so much new. I think electrical engineering department itself, it's really good, but if you look at it in 3 categories or like 3 different aspects, it really shows you how well this department is. If you look at the faculty, we really have really good teachers. We have teachers such as Dr. Irfanullah Chaudhary from MIT. We have Dr. Asim Lone from University of Southern California, and these teachers, they're so good at teaching. They're so great at communicating their concepts, actually getting you to understand what engineering is all about, what kind of concepts, what kind of math you would be needing, what you're learning, how that is going to be used in real life. They're really good at that. But it's not just that the education stops outside the class. I think over here, the teachers over here, such as the ones I've just named, they're over there for you, for the students such as myself, even outside of class. So there have been countless times I've been to their offices asking them questions like, "Ye kaise karna hai? How do I do this? What am I doing wrong?" And they're over there teaching you, they're explaining stuff to you. And even outside just the academic domain, these teachers are really good mentors. I think when I participated, when I wanted to apply for the scholarship recently, which I got selected for, my teachers were over there supporting me, encouraging me throughout that, yes, you should go and apply for this scholarship. And it was an exchange program to United States. And throughout this journey, helping me throughout writing my SOPs, getting recommendation letters, actually telling me what things I should be expecting over there, these teachers are really mentoring me. And outside, I think, if we go outside this academic domain, I think the community over here, it has been very encouraging, very growth-inducing for me at UET Lahore. So when I came over here, all I was concerned about was academics. But to my surprise, we had IEEE over here, we had IET, we actually had sports communities, especially which focused on electrical department, and they opened a world for me. Especially in terms of soft skills. So when I was in my first semester, I wasn't really looking at IEEE. I wasn't very excited about IEEE, but I think joining that and giving a new dimension to my education outside of the class was also what EE department actually helped me with. So now after 2 years, in my 3rd year, I am here being a chair of WIE.
triply, and I think the journey all over has really shaped me as a person too. I actually can relate to the freshmen coming in. The first years, I understand their stress. I can actually help them through it. So that has been incredible. Other than that, I think what other actually just gets brushed off, usually related to EE department over here, is they actually teach you very subtly how to live life and how to manage yourself, how to manage your time, manage your resources, because electrical department, let's be real, is very competitive. It's very it has like really hard courses at times, and you, while you're over there trying to learn and the teachers are really helping you, you really still have to see yourself as a person. And I think EE department provides that opportunity in a very good way, so you can see where you're going and how are you developing as an engineer, as a person, and as a contributor to the community. So I think EE is the best over here. Assalamu alaikum everyone, a very good morning, and I am Ali from Electrical Session 2021, and it's been 3 years since I'm a part of this journey, and I hope that the things go in the same streamline and in the same wavelength. Regarding my experience in University of Engineering and Technology Lahore, firstly I would say कि यहाँ पर जो इसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लोगों का और स्टूडेंट्स का और फैकल्टी का आपस में रिलेशन बहुत अच्छा है। और इसके अलावा सेकेंडली द थिंग इज़ कि यहाँ की रिसर्च जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रिसर्च डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई आइडियाज़ हो किसी के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में कोई भी रिसर्च के हवाले से कोई भी बात हो, तो ही नेवर हेजिटेट्स टू टेल दैट फैकल्टी मेंबर कि मुझे ये चीज़ करनी है, बतानी है। सो देयर इज़ एन ओपन एनवायरनमेंट टू एक्सप्लोर एनीथिंग वट एवर यू वांट। इसके अलावा थर्डली कमिंग टू द पॉइंट, हम देखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का बाकी ओवरऑल जो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ से डिग्री के बाद अक्सर लोग हम देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन यूईटी के ग्रेजुएट को ये एज मिलता है कि अगर वो यूईटी से पढ़ के जाता है तो फर्स्टली ही इज़ डेवलप विद दोज रिसर्च स्किल्स, innovative skills, presentation skills, communication skills, all that things जो कि एक इंटरव्यू से लेके आपको जॉब तक जो है वो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, वो सब चीज़ आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स के टीचर्स का अगर मैं जिक्र करूँ जहाँ तक, तो हमारे नेमली सर आसिम लोन और हमारे सर उबैदुल्लाह फ़याज़ और इसके अलावा हमारे चेयरमैन मिस्टर मोहम्मद ताहिर, मैं उनकी नॉलेज के बारे में अगर कहूँ तो इतना उनका डीप लेवल का नॉलेज है अपनी फील्ड के साथ लेके कि अगर वो जब लेक्चर लेने आते हैं तो हम लोग उसमें बिल्कुल घुल जाते हैं, एंड वी आर जस्ट इंजॉइंग ईच एंड ईच लाइन। और हमें जो चीज़ मिलती है वो आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी किसी बुक से या किसी भी इंटरनेट से हमें मिल सकती है। सो दे हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज अलॉन्ग विद द स्पेशल स्किल सेट जो कि एक स्टूडेंट को वो लोग दे सकते हैं। इसके अलावा आई वुड से कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं डिपार्टमेंट लेवल के अंदर। हमारी यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं IEEE IET जो कि स्टूडेंट को इंगेज करती हैं विद इन, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर का है या थर्ड सेमेस्टर का है, सेकंड सेमेस्टर का है, डजंट मैटर। वो इंडस्ट्रीज जब आती हैं उनके साथ वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, दे गेट टू नो अ लॉट ऑफ स्टफ। अभी रिसेंटली हमारा एक इवेंट हुआ था स्काडा का, और इससे पहले हमारा ब्रेनियक का बहुत सारे ब्रेनियक का इवेंट हुआ था, समिट ऑन सॉफ्ट स्किल्स का हुआ था। सो एज अर्लियर आई मेंशन के फ्रॉम द कम्युनिकेशन स्किल्स टू टेक्निकल स्किल्स, इनोवेशन इज एट द नेक्स्ट लेवल। तो आई डोंट हैव more words to explain. I'm just I don't have a lot of words to say कि मैं क्या क्या चीज़ें इसके बारे में बताऊं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समंदर है। So that's all what I have to say. Electrical department of University of Engineering and Technology Lahore has brought me at this edge के थर्ड सेमेस्टर में आके, मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में था मैं आज भी याद करता हूँ, मैं कैमरा के आगे आने से शर्माता था एंड आई वाज सो शाय, और मुझे कभी भी ये नहीं था कि मैं लोगों के सामने कैसे आके बोलूँगा, लोगों से मिलूँगा कैसे। बट
आई डोंट नो, ये जो जितने भी हमारी यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी हमारी ये प्रेजेंटेशंस की क्लासेस होती हैं, ये एक इंसान के एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं जो कि बस वो कहीं भी कुछ भी कह सकता है। फॉर एग्जांपल आप अगर एक इवेंट पे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो स्टेज पे जो भी बंदा है, ठीक है, ही इज़ आस्किंग के कोई भी क्वेश्चन है, सो whoever wants to come to the stage, he can explain that thing. तो वहाँ में कोई हज़ारों में से कोई एक बंदा होगा, तो वो जो चीज़ है ना, वो आपको यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी में और जो जिस तरह की सोसाइटीज़ के और डिपार्टमेंट में जितनी भी जो है वो हमारे कोर्सेज होते हैं, हमारा जो सोसाइटीज़ के इवेंट्स होते हैं, उसमें अगर बंदा पार्टिसिपेट करे अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो मेरा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुए हैं इस वजह से, एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ibrahim Noor Kulmiye. I am from Somalia. I'm here to study University of Engineering and Technology, Lahore. I'm studying electrical engineering department. I am final year student. So today I have got this chance to interview the seniors of the graduated who have graduated in this university. And in here electrical, you have seen different things like teachers. They are very good teachers. When it comes to studying in labs, they explain. In labs you will get some skills. In labs you will get some skills, and that's why I'm here. Before I came here, I have no idea how the study will look like. But when I came here, Alhamdulillah, everything is going well. Now I'm doing my final year project. My supervisor name is Omar Imtiaz, Mr. Omar Imtiaz, and course supervisor Dr. Omar Shami. Actually, our final year project is related about transmission line monitoring using IoT system. We are just calculating voltage, current, and power phase angle of two cities like Lahore and Mangala, different places. So now I'm doing my final year project. Alhamdulillah, it's going well. When it comes to universities, we can say this is university, one of the best universities in Pakistan, engineering. You have seen different people from different countries, like Somalia that I came from, Ethiopia, Kenya, Sudan, Egypt, Masr, and Palestine, and different other South Asian countries like Nepal and other countries. So here in study it's quite normal. So that's why I'm here, and I would like to thank my German who helped me many times, Professor Dr. Muhammad Tahir, who right now currently encouraged me to appear this interview. So that's all about my interview. I said to the people, you can come here, UET, and get future pride, and you will get good education, good quality education. Okay, assalamu alaikum. I am Abdullah Muhammad from Sudan, from Electrical Engineering Department. I am from 21 session. So my experience in the electrical department was a little bit difficult experience, because at the first I have some difficulty in the language, but after that I got normal, because everyone helped me, my classmates, my teachers, they do everything they can to help us, and everyone was very helpful to us, and I had a very good experience, like in the labs. They have a good labs and classes, and in total my experience in the university was a little bit difficult, but it's normal, because this is the university life. You need to have some difficulties and face it to be a better person.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरहम अहमद है और मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूटी लाहौर में। और जो मेरा सेशन है वो 2020 है। ये वो सेशन है जब कोविड आया था और कोविड के अंदर ही हमारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई थी। हमारा पहले सेमेस्टर का जो पहले 2 महीने थे वो ऑन कैंपस थे, उसके बाद हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। तो जब हमारा ऑन कैंपस से ऑनलाइन ट्रांजिशन हुई तो उस वक़्त हमें कोई इतना कमी फ़ील नहीं हुई, क्योंकि जो हमारे टीचर्स थे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमें पढ़ा रहे थे, उन्होंने ख़ास तौर पे जो हमारी लैब्स थी, जैसे हमारी सर्किट्स की लैब थी और सेकंड सेमेस्टर में एक हमारा कोर्स आया था जिसमें हमने पीसीबीज़ डिज़ाइन करने होते, तो उसके अंदर हमारे टीचर्स ने इस तरह का सिलसिला ये कर दिया था कि हमारे लिए वो चीज़ों को प्रैक्टिस करना और उनको इस्तेमाल करना, बनाना, और उन्होंने ट्यूटोरियल्स हमें इतने अच्छे दिए कि हमारे लिए उन चीज़ों को ग्रैस्प करना बहुत आसान हो गया था और हमें कोविड की वजह से इतना कोई मसला नहीं हुआ। ज़ाहिर बात है ऑनलाइन में थोड़ा बहुत इशू आता है, लेकिन ज़्यादातर जो एकेडमिक गैप था वो टीचर्स ने मैक्सिमम कोशिश की कि उसको कम कर दिया जाए। उसके बाद बाकी सेमेस्टर्स में भी टीचर्स की असल में काफ़ी एफर्ट हमारे ऊपर रही हुई है और हर जो सेमेस्टर हमारा गुजरता है उसके अंदर हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं। जिस तरह हमारे शुरू के सेमेस्टर्स में बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह सर्किट के प्रोजेक्ट्स, बेसिक फ़िल्टर्स डिज़ाइन करना, फिर उनका पीसीबी बनाना। और हमारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के नहीं होते कि वो अगर किसी एक कोर्स का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें सिर्फ वही कोर्स की चीज़ें इस्तेमाल होंगी, उसमें उससे पहले जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं उन सब की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह हमारा अगर एक सर्किट का हमें प्रोजेक्ट मिला, उसमें हमने एक आरएफ फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, तो उसमें सर्किट सिमुलेशन के टूल्स आ जाएंगे जो हमने सेकंड सेमेस्टर में सीखे थे। उसमें हमारा बेसिक सर्किट एनालिसिस आ जाएगा जो हमने थर्ड सेमेस्टर में सीखा था। और फिर उसमें जो बाद में उसकी प्रोटोटाइपिंग है जो हमने पीसीबी बना के करनी होती है, वो हमने सीखी थी सेकंड सेमेस्टर में और वो भी उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो वो चीज़ें हमें बार बार प्रोजेक्ट्स इस तरह के दिए जाते हैं ताकि वो चीज़ें हमारी इनकलकेट रहें और हम उनको रिवाइज़ करते रहें, हम उनको प्रैक्टिस करते रहें। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है, हम समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी प्रेशर हो रहा है, हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो मेरी एक इंटर्नशिप हुई थी, वो थी पेल के अंदर। और जब मैं उस इंटर्नशिप में गया तो वहाँ जाके हमें एक टास्क मिला जिसमें हमने पीसीबी को सोल्डर करना था, उस पर एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हुई थी उस तरह, हमारे टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया हुआ था, तो मुझे तब एहसास हुआ था कि जब टीचर्स ने आपको इतना मेहनत से पढ़ाया होता है तो उस चीज़ का असर आप पे तब आता है। और उस वक्त वो जो टास्क हमें मिला था वो करने मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। और उसके बाद और भी टास्क वगैरह मिले, हमें प्रोग्रामिंग के मिले और कुछ हमें रिपोर्ट राइटिंग के मिले, प्रेजेंटेशन के मिले। तो वो सब चीज़ें हमारे कोर्स लेआउट में हमें टीचर्स पहले ही प्रैक्टिस करवा देते हैं। और ये जो एकेडमिक गैप होता है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के दरमियान में, वो हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स करने के बाद हम इंटर्नशिप्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, तो जो वहाँ के सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं वो भी इस चीज़ को काफ़ी इंकरेज करते हैं कि आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए, और अगर आपको पता हुआ है तो आपके लिए बहुत +1 होता है। उसके साथ यहाँ पे मेजर्स काफ़ी ऑफर होते हैं हमारे जब हम फाइनल ईयर में एंटर होने लगते हैं। तो 6th सेमेस्टर में हमारे पास ऑप्शन होती है पावर की, कंप्यूटर की, टेलीकम्युनिकेशन की। तो जब मैं यहाँ पे पहले आया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो मुझे प्रोग्रामिंग से काफ़ी डर लगता था। लेकिन टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे मिले कि उन्होंने हमारे अंदर इस चीज़ का शौक़ पैदा किया है, सिखाया कि चीज़ों से डरना नहीं है, उनको लेके कैसे चलना है। और प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिस तरह आपने लॉजिक कैसे डेवलप करनी है, वो चीज़ें हमें बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में बहुत प्रैक्टिस के साथ सिखाई गई। तो उसके बाद जब मेरा पहला सेमेस्टर था तो मुझे अगर कोई रिकमेंड करता कि तुम आगे कंप्यूटर के अंदर जाओ, तो शायद मैं उस वक्त ये बात ना मानता। लेकिन जब मैं 5th सेमेस्टर में पहुंचा तब तक मेरा खुद ही इतना एक्सपीरियंस बन चुका था और इतना मैं इंटरेस्टिंग मुझे लगना शुरू हो गया था कंप्यूटर की फील्ड, कि मैंने अपना फाइनल ईयर का जो मेजर था और प्रोजेक्ट भी था वो भी मेरे कंप्यूटर के अंदर ही किया। और फिर मैंने जब कंप्यूटर की फील्ड अडॉप्ट की तो उसके अंदर मेरे पास मशीन लर्निंग वगैरह के कोर्सेज आ गए। और मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो बेसिकली चिप डिज़ाइन से रिलेटेड है। उसमें मैं हार्डवेयर वगैरह बना रहा हूँ और उस हार्डवेयर की सिमुलेशन वगैरह करना, वो सारा हमारा सॉफ्टवेयर बेस का काम है। और उसमें टीचर्स हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। जो मेरे फाइनल सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर उबैदुल्लाह फ़याज़, वो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। और अब मैं आखिरी बात बस ये बताऊँगा कि जो टीचर्स थे उनके थ्रू मैं एक इंटर्नशिप पे भी गया था, जो मेरी एक माइटिक्स की इंटर्नशिप थी कनाडा में। उस इंटर्नशिप में चेयरमैन और सर AR काशिफ, उनकी तरफ से मुझे रिकमेंडेशन मिली और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड आई विश एवरीवन वेल। और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह
मैं अपने टीचर्स की जो मेहनत है उसको और ज़्यादा बढ़ाऊँगा और इंशाल्लाह इस डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा करूँगा, इंशाल्लाह नाम रोशन करूँगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम सबूर है। मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 2022 सेशन से हूँ, बी सेक्शन से। फ़िलहाल डिपार्टमेंट के अंदर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तमाम टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं। लैब्स के अंदर भी हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे लैब्स के अंदर हमने काफ़ी कुछ परफॉर्म किया है। हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट्स की लैब, मेकर्स लैब, आजकल हमारी कंप्यूटर एनालिसिस एंड डिज़ाइन की लैब है। लैब का इक्विपमेंट भी हमारा अच्छा है काफ़ी, उसके बाद हमने काम किया है। फ़िलहाल तो हमें मेजर कोई इशू नहीं आया। टीचर्स के हवाले से भी टीचर्स भी हमारे काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं। हमने अगर कोई इशू आता है हम टीचर से डिस्कस करते हैं, टीचर भी हमें उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि टीचर्स काफ़ी अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन इन माय एक्सपीरियंस टीचर्स जो हैं वो सही पढ़ा रहे हैं और एक्सप्लेन भी काफ़ी अच्छा करते हैं। ओवरऑल डिपार्टमेंट के अंदर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मेरा बड़ा भाई अब्दुल्ला सबूर, वो भी इधर से ही भी पढ़ के गया, 2019 सेशन से वो था। आजकल वो यहाँ से ग्रेजुएट होके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में गया है, स्कॉलरशिप के ऊपर वो उधर पढ़ रहा है। उसका भी, उसने मुझे बताया था, उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं। 20 सेशन के, 21 सेशन के, 19 सेशन के जो सीनियर्स पास आउट हो गए उनके साथ भी हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके अलावा हमारे जो यहाँ पे बैचमेट्स हैं वो भी काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, उनके साथ भी हमारे काफ़ी कोऑपरेशन है। अभी हमने वेलकम पार्टी भी अरेंज की थी अपने जूनियर्स के लिए, उसके अंदर भी हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है। बाकी मेरे फ्यूचर में गोल यही है कि एटलीस्ट अपने स्किल्स को होन करूँ ताकि मैं उसके हिसाब से आगे काम कर सकूँ। अभी प्रैक्टिकल साइड के ऊपर मैं पीसीबी डिज़ाइनिंग के अंदर काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर काम कर रहा हूँ, और बाकी ओवरऑल हमारा बिजनेस है उसके अंदर प्रैक्टिकल साइड पे काफ़ी काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा फ्यूचर के लिए तो मैं यही चाहूँगा फ़िलहाल जो यूनिवर्सिटी में जिस तरह करवा रहे हैं उसके साथ साथ मैं काम को प्रैक्टिकल साइड पे भी थोड़ा थोड़ा काम करता रहूँ।